कस्बे के सैलोम इंग्लिश मीडियम विद्यालय में विज्ञान कला एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शाला निदेशक डॉक्टर जोसेफ राज ने बताया कि इस मौके पर अभिभावक एवं गेस्टों की ओर से बच्चों की ओर से बनाए गए सोलर सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, विंड एनर्जी एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित अन्य मॉडलों को सराहा व उनकी जमकर प्रशंसा की। अभिभावकों ने प्रदर्शनी को देखकर कहा कि विद्यालय में लगने वाली प्रदर्शनियां बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने का काम करती है। वहीं लोगों ने उनका उत्साहवर्धन करते बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के डायरेक्टर एवं प्रबंधक सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में जहां बच्चों की वैज्ञानिक सोच दिखाई दी, वहीं आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों की क्रिएटिविटी की झलक भी देखने को मिली। प्रदर्शनी में बच्चों ने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर आकर्षक मॉडल बनाए हैं, जिसको दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। इन सभी मॉडल को शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की ओर से संचालित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। My name is Tanmay Khandelwal. I made a topic on the great debate on energy. This is solar energy. The sun rays absorbed by the solar panels, which in turn convert them into direct current, and we use them in the house appliances and road lights. And the stored energy is also used in other electrical appliances. And this is thermal power, in which the non-renewable resource is used in the boiler. When water comes from the feed water tank, it boils and the steam produced. When the steam produced in high pressure, the generator and turbine starts, and the turbine when move, it produced electrical energy from the steam, and then the electrical energy is stored. साला इसके डिस्टेंस में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और इन प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। सन इनको लाइट प्रोवाइड करता है। और एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे एयर, वाटर एंड लैंड अवेलेबल है। अपने यूनिवर्स में पहले प्लूटो था जो नष्ट हो चुका है और अब उसको डार्क प्लैनेट के नाम से जानते हैं। Sir, the water come on the roof. The water go to the pipe to the tank. The controller switch is on. The water go to the pond and fill through pump and tank. The social science working model of India state and its capital. When one end of the terminal is kept on a state and the second end of the terminal is kept on the respected capital, then the circuit is complete and buzzer beeps. But when the one end of the terminal is kept on the state and second end of the terminal is kept on the wrong capital, the buzzer does not beep. Principle of this model is photovoltaic effect because the energy is absorbed by the solar panels, which case which turn the sunlight into electrical energy, and which case it has three parts: a controller and a solar panel and a submersible pump. The water is taken up from the pond and supplied to an overhead tank. Through this, the water is irrigated. With this solar panel, the electricity is made by the sunlight. Good morning. We are from 9th class. My name is Dipanshi Gupta. My name is Chetna. This model we made in objective to save our environment. In this model, we are differentiate between the bad environment area and the good environment area. In this area, the pollution is coming from the factories, vehicles, factories and the power plants. Power plants are used in this area to produce electricity, which they produce water pollution in the rivers. From vehicles and the factories, the smoke are coming out, which is air pollution. In this area, for the solution, we are use the renewable source of energy like windmill and the solar panel to produce electricity. In this area, people are cutting trees, so animals were not able to live peacefully. In this area, we show the forest sanctuary, so animals and both peoples are live peacefully in this area. In this area, the peoples are cutting trees, so level of the oxygen is decreased. For this, the atmosphere is shown warm and the hot, which is global warming. In this area, we show the pleasant atmosphere, which because less pollution. The aim of this project is to promote social environmental awareness and to make people responsible for environment, because environment is very important for all of us. Thank you.